My name, good morning 10th class. Our today's topic is artificial vegetative propagation. Okay, in this method, different vegetative parts of the plant, for example, stem, uh, uh, roots, etc., they are used for the propagation of new plants. Okay, from these parts, new plants can be produced. Okay, mostly gardeners and farmers they utilize this method for the production of various plants, okay, and to increase the stock of the plant. Okay, now there are different methods of artificial vegetative propagation, and today we will discuss two of them, cuttings and grafting. Okay, cutting method, first of all, this method is mostly used in अक्सर आपने आप लोग भी यूज़ किया होगा, लाइक व्हेन यू कट द स्टेम ऑफ फॉर एग्जांपल रूट रोज़ प्लांट, रोज़ को जब आप ग्रो करते हैं, you cut its stem and then buried in the soil, and after some days you will notice that new plant will be generated from these cutting. So in this method what you will do, stem or root of the parent plant is taken, and these region have meristematic region which have ability to grow, okay, increase. Okay, we have discussed these in our previous classes. Okay, then these cuttings then place in soil, and then suitable condition will provided, for example nutrients, water and sunlight, and then from these cutting root and shoot will develop, and identical plant to the parent will develop from these cuttings. So this is a simple method in which stem or root is grown into the soil, and then from that cutting new plant is produced. Now different plants they are grown from this method. For example, sweet potato is another example of cutting, and it is basically a enlarged root. Okay, and what in this process what basically farmer do, it is grown into the soil, and from after few days there are many plantlets are produced from this single plant. Okay, बहुत सारे plants produce हो जाते हैं from this single root, or which are exactly similar to their parent plant. Then these plantlets then grow into another soil. So this method is very common, and this is very easy method, and this is also used to grow different plants like sugar cane. It also grown by this method. Okay, again this is the figure shows the cutting method. In this this is the parent plant, and its stem is cut, and then the cutting is grow into sand soil, and then suitable conditions are provided, and this cutting then grow into a new plant. So this is a method of artificial vegetative propagation. Okay, now another method is grafting. In grafting what is actually done, a piece from stem is cut from the parent plant. ठीक है, stem आप cut करेंगे, and एक plant से और इसको आप attach कर देंगे another plant के साथ which established root system. ठीक है, उसको आप किसी ऐसे प्लांट के साथ अटैच कर देंगे जो ग्रो हुआ है, जो सॉइल के अंदर होगा. इट मीन्स दे हैव एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम. फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, दिस इज द पीस ऑफ स्टेम which is cut, and then this is attached to the another plant, and this plant have established root system. Okay, after a while this is vascular bundles of the attached stem piece of the host plant are connected to each other. इनके दोनों जो आपने stem आपस में attach किए हैं, their vascular bundles they attach to each other, and they will then grow into a new plant. So this method is used to propagate many plants, for example roses, peach tree, plum trees, and various seedless fruits. They can be used
this method can be used to grow these plants. Okay. Now what are the advantages and disadvantages of vegetative propagation? अब इनके क्या advantages हैं? There are many advantages of this method. First of all, they are exactly similar to their parents. They are genetically identical. ठीक है, क्योंकि sexual reproduction में आप we have already discussed there is no variation take place, so the offspring which are produced they are exactly similar to their parents. ठीक है, पेरेंट्स के बिल्कुल एक जैसे होते हैं. that's why they are genetically identified. so that's why their beneficial characteristics can be preserved. ठीक है, क्योंकि अब कोई चेंजेस नहीं आए तो जो भी बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिजर्व रहती हैं. और इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ अ मैकेनिज्म पॉलिनेशन. और सेकंड बेनिफिट क्या है कि बिकॉज देयर इज़ नो फ्लावर्स वगैरह की इसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्लावर्स, तो दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ pollination. Or it also another benefit is it helps to increase the plant at rapid rate. Okay, बहुत जल्दी जो है बहुत सारे प्लांट जो है प्रोड्यूस होते हैं at the rapid rate. And the organs of the vegetative propagation enable many plants to unfavorable condition. Okay, तो इसमें आप क्योंकि स्टैम्स और रूट और शूट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये मेथड जो है इससे आप बहुत सारे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. और अनदर बेनिफिट इज प्लांट बेयरिंग सीडलेस फ्रूट कैन ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, जो सीडलेस फ्रूट जो है आप इस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज सीड्स जो हैं इसमें यूटिलाइज नहीं होते, तो दैट्स व्हाई सीडलेस फ्रूट कैन ओनली ग्रोन बाय दिस मेथड. So these are advantages of vegetative propagations. Okay, now what are the disadvantages? क्या है इसके disadvantages? The plant do not have genetic variation. सबसे पहले उसमें genetic variation नहीं होती, तो this is not a good point कि आपकी सपोज अगर कोई ऐसी डिजीज़ अगर आपको कोई जीन्स में जा रही है तो इट ट्रांसफ़र आफ्टर जनरेशन. और कोई एक डिजीज़ किसी एक प्लांट को लगी है तो इट कैन अटैक एंड दिस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर क्रॉप. तो आपको जेनेटिक डिजीज़ अगर किसी प्लांट को हो गई है तो डैट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर क्रॉप, क्योंकि सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं. तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ this method. Now another method is tissue culture and cloning. Now what is cloning? This is another method of asexual reproduction, vegetative propagation. इसमें basically आप क्या करते हैं only you use cell or tissues आप किसी parent plant के लेके उससे आप पूरा plant जो है generate कर सकते हैं. तो this method is known as cloning. और जो इसमें टेक्निक अप्लाई करते हैं विच इज़ इट इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक विच अप्लाइड इन दिस मेथड. एंड दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन. इसे आप क्या कहते हैं, क्लोनिंग के मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट जो है आप यूज़ करके उससे न्यू प्लांट जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं. इसमें आपने क्या करना है, यू कैन टेक टिश्यूज़ from any part of the plant and then you will put this plant into a suitable nutrient medium में आप इसको transfer कर देंगे. then this plant cell then they start grow by mitosis और then it produce a mass which is called a chlorosis. ठीक है, तो वो mass जो produce होएगा from the cell or tissue after mitosis it is known as chlorosis. or then you will transfer this chlorosis to another medium which contain different hormones and different nutrients and from which roots, stem and leaf will grow. ठीक है, उस chlorosis से roots, stems और leaf form हो जाएंगे. then chlorosis make these structure and then grow into a small plant. फिर उससे से new plant produce हो जाएगा. the small plant and then planted in pots and then in fields. ठीक है, फिर इसको pots and then ultimately
आप इसको फील्ड में ग्रो करेंगे एंड दैट्स हाउ फ्रॉम सेल और टिश्यू new plants can be produced. So these are the some methods of asexual reproduction, cloning, and artificial vegetative propagation method. Learn this method, okay? And from today, Allah Hafiz.